Welcome back to the course on computer aided design and manufacturing, that is CAD-CAM. And as you know that we were discussing computer graphics. Now let me just recapitulate what we have discussed till now. I explained you in the previous class that what computer graphics is. Computer graphics involves display, manipulation and storage of pictures and experimental data for proper visualization using a computer. And for this, typically a computer graphics system consists of a host computer, okay, which must have a fast processor, a large memory, a buffer system, along with some few crucial components. Now, I also explained you that all types of display systems, whether they are CRT, that is cathode ray tube, or flat panel displays. Flat panel displays means which you might have seen in your homes or in any television shop, that is LEDs, LCDs, your laptops. So that are called as flat panel displays. So whether we are talking about flat panel displays or whether we are talking about the cathode ray tube display system, so all types of display system are of raster display types. Now what is raster display type? That you know already, that in raster display our screen area is divided horizontally and vertically into small matrix of elements, and that small element is called as a picture element or a pixel. Okay, and we also define a pixel, that a pixel is a small addressable area in a computer screen. If you remember, I explained you that if our screen is divided horizontally and vertically, this is horizontally, this is the raster display basically, and the small, this small matrix, this small element is called as a picture element or a pixel. Now I will start my today's lecture by telling you that how scanning takes place in raster scan. Okay, how you will see the image on a computer screen. आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेज दिखती है वो किस तरह से दिखती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दैट क्विकली. So to produce a picture on the screen, the electron beam, which is coming from the electron gun, as you know in CRT, it starts at the top of the screen, okay, and scan rapidly from left to right. This is left and this is right. So it scans rapidly from left to right along the row of phosphor dots. These are phosphor dots. So it starts from here, that is the top position, or you can say left position also, top left position. So it will start at the top of the screen and scan rapidly from left to the right. This is the right position. And at the end of the line it moves to the leftmost dot of the next line. Okay, जब ये left बिल्कुल right portion पे आ जाएगा, then this is, suppose this is first number line, this is second number line, this is third number line, this is fourth number line, like that and so on. अभी आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, suppose these are 6 number of lines. फर्स्ट लाइन स्कैन हो गया, लेफ्ट से शुरू किया, टॉप लेफ्ट से राइट पे पहुँच गया. अब सेकंड लाइन का जो फर्स्ट डॉट होगा वहाँ पे किस तरह से आएगा, ये इस तरह से मूव करेगा, लाइक दैट. Okay, like that. The electron beam with high intensity is moving like that. This is the second line. ये इस तरह से मूव करेगा, एंड पे पहुंचेगा. Now it will go down and this procedure continue until our electron beam reaches the last line at this point. Now it will go at this position. अब आपको पता है कि आपका अब ये लास्ट रो जो है या लास्ट लाइन जो है वो स्कैन हो चुकी है. अब उसके बाद दोबारा से आपका इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा इनिशियल पोजीशन पे, जहाँ से शुरू किया उसने वहीं पे जाके पहुँच जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज वन साइकिल. ओके, इसी तरह से जैसे हमने बात करी थी कि रिफ्रेश रेट, दैट इज़ इट मे बी 60 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज, इट मीन्स 70 साइकिल्स पर सेकेंड. तो ये एक साइकिल दिखा रहा हूँ मैं आपको. इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड आल्सो एंड फ्रॉम एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. दिस इज़ वन साइकिल. सो इसी तरह से साइकिल क्या होगा, एक सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होगा या 60 बार चलेगा. दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रेश रेट. Okay, now the next question comes that
how we will see the images. So the electron beam which is coming from the electron gun with high intensity, it turns on and off to create an image. Okay, in order to understand this, let me draw computer screen, suppose like that. And suppose now you want to write a letter B over here. सपोज हमने इस तरह से बी लेटर लिखा हुआ है. अब ये बी लेटर आपको किस तरह से दिखेगा, किस तरह से विजुअलाइज होगा. नाउ इंटेंसिटी ऑफ जो बीम इंटेंसिटी, जो रेज आपकी आ रही हैं, और जो आपको अपना जो पैनल है, दैट इज जो स्क्रीन आपकी है, वो स्क्रीन होती है किसकी, फास्ट 4 डॉट्स की बनी होती है वो. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी, यहाँ पे जो होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ होगा, ऑफ होगा, ऑफ होगा, यहाँ पे आते ऑन हो जाएगा. ओके, ऑन 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 इस तरह से, फिर ऑफ हो जाएगा. ओके, फिर इट विल मूव बैक, इट विल गो लाइक दैट. अब यहाँ पे शुरू होगा, यहाँ पे आते आते अब जब जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास पहुँचेगा आपका इलेक्ट्रॉन बीम, तो वो ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा. सो ये इस तरह से होता है बेसिकली. इसी तरह से आपको पिक्चर्स जो हैं वो दिखती हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर. वेदर इट, ये आपको मैंने लेटर शो करा है, इट मे बी अ पिक्चर, इट मे बी अ पिक्चर ऑफ एनीवन. सो द इलेक्ट्रॉन बीम इंटेंसिटी टर्न्स ऑन एंड ऑफ टू क्रिएट एन इमेज. और वही होता है हमारे पास रास्ट्राइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रास्ट्राइजेशन. जो मैंने आपको कहा था कि विच पिक्सल्स हैज़ टू बी ब्राइट, ओके, which pixel has to be make bright while plotting a line or any image on a computer screen, that is called as rasterization. कौन कौन से पिक्सल्स को हाईलाइट करना है आपने, वही है हमारा रास्ट्राइजेशन. सो ये आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा, बिकॉज ये आपका कैथोड रे ट्यूब का रास्टर स्कैन एक्सप्लेन किया है हमने कि किस तरह से आपका स्कैनिंग हो रहा है. इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रहा है विद हाई इंटेंसिटी, तो वो किस तरह से स्कैनिंग कर रहा है. फ्रॉम इट विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप, ओके, एंड लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद मूव करेगा इस तरह से. दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजेंटल रीट्रेस. ओके, एंड दिस इज द स्कैन लाइन. ये सारी स्कैन लाइन्स हैं. एंड वी डिड वन क्वेश्चन आल्सो इन द प्रीवियस क्लास, एज यू नो. ये क्वेश्चन करा था हमने, और इस क्वेश्चन में देखिए हमने क्या बोला था कि आपको निकालना है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्कैन अ लाइन एंड हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू स्कैन अ पिक्सल. ओके, ये हमने क्वेश्चन करा था. बट यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड यू नो रेक्टिफाई दिस, that I told you that it will start from here, okay, like that, in this way, but that is left to right. वो करेक्ट है, लेफ्ट टू राइट चलेगा. बट ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन बॉटम है, और ये पोजीशन कौन सी, टॉप पोजीशन है. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि बॉटम से शुरू किया हमने और टॉप पे हमने ख़त्म किया. नो, सो दैट वाज रॉन्ग. सो रेक्टिफाई दिस. द स्कैनिंग विल नॉट takes place like that. Now the scanning will takes place how, from top to bottom. As I explained you today, that scanning will takes place from top to bottom, like that. Okay, now it's like this: first line, second line, this third line, fourth line, and number of lines. Okay, suppose 1024 lines per there. This is first line, second line, third line, and so on. 1024 line. So in this phase the scanning will takes place. It will start from here, from the top, and left to right it will go. This is first line, फिर second line पे move करेगा. It will go like that. In this way the procedure will takes place. जैसे यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से move करेगा वो इसी पोजीशन पे आ जाएगा. This is called as one cycle. So rectify this. Okay, the scanning will takes place from the top, okay, and left to right, then go like that. Okay, this is called as how scanning takes place. Now let us go back to the today's lecture. Yeah, so I hope now this is clear to you that how scanning will takes place. Now we will take more numericals on computer graphics, that how questions come in the exams. So this is question number 2. As you know, question number 1 हमने पहले कर लिया था. This is question number 2 now. Now how many kilobytes does a frame buffer need in a 600 into 400 pixels? Okay, now let us solve this question.
Okay, so in this question, the resolution is given to us. This is the resolution 600 into 400, and as you know that 600 pixels are in horizontal direction and 400 pixels are in vertical direction. Okay, this is horizontal and this is vertical. So until now we don't know that one pixel is storing how many bits. So suppose one pixel is storing n bits. Now the size of the buffer will be that resolution into bits per pixel. Okay, and resolution, as you know, that 600 into 400. This is the resolution that we have into n bits per pixel. Now we हमसे पूछा गया है कि आपको निकालना है कि कितने किलो बाइट्स, how many kilobytes does a frame buffer need in order to store this resolution. Now in order to convert this bits into bytes, as you know that 1 byte will be equal to 8 bit. Okay, 1 byte is equal to 8 bit. So from here you can you can convert this bit into byte. That one bit is 1 by 8 byte, so that is 1 by 8, then byte and byte. Okay, and after convert that bytes into kilobytes, and you know the relation that 1 kb is equal to 1024 bytes, that we know. And from here again, you will have to convert this byte into kilobyte. So you will have to divide with 1024, and it will be 600 into 400 divided by 8 into 1024 and kilobytes. And when you solve this, it will be 29.296 n bytes, or you can say it will be 29.30 n bytes. So in order to store this resolution, okay, our frame buffer need 29.30 n bytes. Okay, and n is the, one pixel is storing n bits. Okay, one pixel is storing n bits. So अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि one pixel is storing 6 bit, 5 bit, 4 bit, then you will have to multiply that term here, that एक pixel जो है वो 6 bit store कर रहा है, तो आप multiply करोगे उस particular value से and you will get your answer. So this is how this question will be solved. Now let us take up the second question. This is the second question now. Suppose RGB raster system, and RGB means red, green and blue. Okay, बेसिकली हमारे पास तीन कलर ही होते हैं, जो कैथोड रे ट्यूब के अंदर हमारे पास तीन कलर ही होते हैं, और उन्हीं तीन कलर से हमारे पास सारे कलर्स बनते हैं. आपको जो भी इमेज आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखता है, तो वो उन तीनों कलर्स का कम्बिनेशन ही होता है बेसिकली. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज RGB डिस्प्ले. तो R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन and B for blue. So suppose RGB raster system is to be designed using on 8-inch into 10-inch screen. Now here the resolution is given in the form of inches. Okay, and with the resolution of 100 pixels per inch. So it is given to us that resolution is 100 pixels per inch. एक इंच में 100 पिक्सल्स हैं in each direction, that is horizontally and vertically both. If we want to store 6 bits per pixel, now in this question it is given to us that if we want to store 6 bits per pixel हम कितना स्टोर कर रहे हैं, 6 bits in the frame buffer, how much storage in bytes? Now we will have to calculate the storage in bytes. Do we need for frame buffer? Okay, so let us solve this question. Okay, so now in this question the resolution is given in inches, that is 8-inch into 10-inch. So first convert it into pixels, and it is given to us that the resolution of 100 pixels per inch in each direction. Now the meaning of each direction means horizontally and vertically there are 100 pixels per inch, that is in 1 inch we have 100 pixels. So 8-inch into 10-inch will become in pixels, that is 8 into 100. Okay, this is horizontal and this is vertical. Okay, so this will be horizontal pixels and vertical pixels. How 800 in horizontal direction and 1000 in vertical direction. So now it is given to us in this question now that one pixel can store 6 bits. You can see here
that if we want to store 6 bits per pixel, that is per pixel how much memory is 6 bits. So how much storage in bytes do we need for frame buffer? So therefore the frame buffer size, now it will be, as you know, that resolution, what is the resolution, into multiply by n bits per pixel. So resolution, we have calculated in form of pixels, that is 800 into 1000 into 6 bits per pixel. So the ये bits में आ गया आपके. Now in order to convert the bits into bytes, one byte has 8 bit. So and you will have to convert that bit into byte, that is you will have to divide with 8. So it will become 800 into 1000 into 6 divided by 8 bytes, and it will be 60,000 byte. So this will be your answer. Okay, this will be your answer. And if it may ask to you that you will have to find out the frame buffer in kilobytes, तो कैसे निकलेगा? You will have to divide this 60,000 with 1024 and it will be 58.59 kilobyte, if it may ask. But in this question only हमसे पूछा गया कि bytes में आपको कितना space, how much space you need in order to store this resolution when one pixel can store 6 bits. So answer will be 60,000 bytes. Okay, so I hope this question is clear. So let's move on the next question now. Now this is the question: find out the aspect ratio of the raster scan system using 8 into 10 inch screen and 100 pixels per inch. Now you will have to calculate the aspect ratio. So let me just explain you that what is aspect ratio. This is the computer screen, you can say, as we have explained you. And in this computer screen, this is called as width. इसको हम width कहते हैं. This is the width of the computer screen, and this is the height of the computer screen. Computer screen की क्या है? Height है. And aspect ratio का जो formula है, that will be width to height. Okay, width to height ratio is called as aspect ratio. And what is resolution? If we want to explain resolution, then resolution will be width into height. Okay, अगर आपको ये गिवन हो कि आपके पास सपोज जैसे हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं, सपोज 1280 into 1024, so it means there are 1280 pixels in the horizontal direction and 1024 in the vertical direction. So when you will divide, this is the width now, this is the width, that is when you will divide 1280 by 1024, it will gives us the aspect ratio. Okay, and in order to find out the resolution, that how many total number of pixels are there, then you will have to multiply 1280 into 1024. वो total number of pixels आ जाएंगे आपके उस computer screen में. Okay, and now let us find out the aspect ratio of the raster system using 8 into 10 inches. So the resolution is given in this question in inches. So just like we did in the previous, that convert your resolution into pixels. So it is given to us that 100 pixels per inch. एक इंच में there are 100 pixels. So 8 into 100 into 10 into 100 pixels in the vertical direction. So resolution will become 800 into 1000. This is the resolution. Okay, now aspect ratio will be, that is, अब ये क्या होगा हमारा, this is width and this is height. So 800 divided by 1000, that is 8 divided by 10, or you can say 4 divided by 5, or aspect ratio you can say
aspect ratio will be 4:5. This is the answer. This is how, if the question is coming that find out the aspect ratio, so aspect ratio for this is 4:5. Okay, so I hope this question is clear. Now let us solve the next question. That is, this is the last question. Now let me read the question. How much time is spent scanning across each row of pixels during screen refresh on a raster system with the resolution of 1280 into 1024 and a refresh rate of 80 frames per second? इसी तरह का हमने मिलता जुलता क्वेश्चन, अगर आपको याद हो, हमने कल भी करा था. द ओनली डिफरेंस वाज, आई गेस, देयर द रिफ्रेश रेट वाज डिफरेंट. हेयर रिफ्रेश रेट 80 फ्रेम्स पर सेकंड इज गिवन टू अस. और इसको इसको आप लोग हर्ट्स में ही बोल सकते हो. 80 हर्ट्स, 80 हर्ट्स मीन्स 80 साइकिल्स पर सेकंड. और सम यहाँ पे लिखा हुआ 80 फ्रेम्स पर सेकंड. सो ऑल आर सेम. फ्रेम्स बोलो या साइकिल बोलो, all are same. So let us solve this question. So in this question the resolution is given to us 1280 into 1024, and now till now I hope that you know that what is the meaning of this, that 1280 pixels are in a horizontal direction. Same question हमने कल भी किया था. That is, if this is the computer screen and it is divided horizontally and vertically into small matrix elements, so 1 2 3 4 and so on, 1280 pixels are there in horizontal direction. And if we talk about the vertical direction, then 1 2 3 4 and so on, 1024 are vertical pixels. So in this question the frame, the refresh rate is given to us, that is 80 frames per second. 80 frames per second. ओके 80 फ्रेम्स पर सेकंड, इसका मतलब यही है, दैट इज रिफ्रेश रेट इज 80 हर्ट्स. यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अलग क्या यूज़ करा हुआ टर्म, फ्रेम. सो 80 फ्रेम्स इज इक्वल टू मीन्स 1 सेकंड. मतलब 80 टाइम्स जो है रिफ्रेश हो रहा है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन इन 1 सेकंड. और इसको हम अनदर वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स 1 फ्रेम इज टेकिंग 1/80 सेकेंड्स. और एक फ्रेम कितना टाइम ले रहा है आपका, 1/80 सेकेंड्स ले रहा है उसको रिफ्रेश होने में. और अकॉर्डिंग टू रिफ्रेश रेट एक सेकंड में कितना हो रहा है, 80 टाइम्स वो रिफ्रेश हो रहा है. एंड हाउ स्कैनिंग टेक्स प्लेस, अभी हमने एक्सप्लेन किया आज के लेक्चर में, दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ओके, इट विल गो लाइक दैट. उसके बाद इज द फर्स्ट लाइन, नाउ इट विल गो हेयर सेकंड लाइन पे, देन इट विल go like that, and third line, scan the third line, then go to the fourth line and so on. It will go to the last line, that is 1024, and scan the last line, then go back to the initial point. तो यहाँ से शुरू हुआ, यहीं पे खत्म हो गया. दिस इज कॉल्ड एज योर 1 फ्रेम. ये एक फ्रेम पूरा स्कैन हो गया आपका. और इस देखिए, फ्रेम बोलिए आप, चाहे इसको बोलिए आप जस्ट लाइक साइकिल. कल हमने बात करी थी ना कि 80 साइकिल्स पर सेकेंड. तो साइकिल को आप यहाँ पे इन्होंने फ्रेम यूज़ किया है, न्यू वर्ड. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. 1 फ्रेम और 1 साइकिल इज द सेम थिंग. नाउ यू नो दैट हाउ मैनी नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर इन 1 फ्रेम. इस एक फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है. और आप लाइन का ध्यान रखना, ये जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है, हम लाइन इसको बोल रहे हैं, दीज आर द लाइन्स. लाइन मीन हॉरिजॉन्टल लाइन्स. तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर, 1024 horizontal lines are there जिनको हम स्कैन कर रहे हैं. सो a 1 frame consists of 1024 lines, and it means that 1024 scan lines takes 1/80 seconds. एक फ्रेम में कितना है, 1024 लाइन्स, और वो कितना टाइम लेती है, 1/80 सेकेंड. ये मतलब हो ना इसका. नाउ हमसे पूछा गया है द टाइम रिक्वायर्ड टू स्कैन ईच रो. How much time is spent scanning across each row of pixel? कितना टाइम लगेगा for this refresh rate? So it is very easy that 1/80 एक फ्रेम के लिए टाइम लग रहा है, divided by, if you divide this with total number of rows, these are total number of rows, horizontal rows, और इनको लाइन भी बोल सकते हो, और लाइन्स. तो आपका क्या आ जाएगा, एक लाइन का आ जाएगा. एक लाइन को टाइम स्कैन करने में कितना टाइम लग रहा है, that will be in seconds. So 1.22 into 10 raised to power -5 seconds. अगर if you want to calculate that in microseconds, then multiply this term with 10 raised to power 6, then it will be 12.21 microseconds. सेम क्वेश्चन हमने कल भी करा था, बट यहाँ पे एक नया वर्ड इन्होंने यूज़ करा, दैट इज़ फ्रेम्स, साइकिल की जगह.
So it it must be clear to you that how we will solve this question. So देखिए ये कुछ questions हैं आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर जो आ सकते हैं पेपर्स में. So यहाँ पे I now end my today's lecture. Watch this lecture carefully, and if you face any difficulty in between this lecture, you can ask. Okay. And now we will after this we will start how to draw a line on a computer screen, and what are the different algorithms with which we draw a line on a computer screen. Okay. So thank you so much.